Dreaming of becoming an airline pilot in India? Before you take off, let me help you with the most important step, that is DGCA Class 2 Medicals. In this video, we are going to discuss about what is DGCA Class 2 Medicals, how much it costs, and what are tests required in this DGCA Class 2 Medicals, and what you should expect from these DGCA Class 2 Medicals. So sit back and relax, and let me guide you through this whole process of DGCA Class 2 Medicals. So, I have decided to divide this whole video in like 4 to 5 segments for better understanding of these DGCA Class 2 Medicals. Before starting this video, let me introduce myself. Myself, Govind Rao. I'm also an aspiring pilot like you all. And you might be wondering कि भैया वीडियो क्यों बना रहे हो and all of this stuff. So, when I was applying for my DGCA Class 2 Medicals, so I came to know that internet is full of like wrong information, and many agents are like frauding many students. They are asking a huge amount to apply for DGCA class 2 medicals only. Like they are asking 4 to 5k for applying for DGCA class 2 medicals. So I thought, why not to share some information and my experience of DGCA class 2 medical with you all, so you can make your decision on DGCA class 2 medical. So this is my first YouTube video on this entire internet, so I might be make some mistakes in the further videos, so please avoid those mistakes, and please support me by hitting the subscribe button. And you might be wondering कि भैया बार बार नीचे क्यों देख रहे हो. So for your information, I'm telling you, I've written all the points over here, so I might be looking on this copy and address you all, so I cannot miss any point. So let's start this video. Segment 1. What is DGCA Class 2 Medicals? This is the first official requirement set by the DGCA. Basically, before you fly an aircraft, the government wants to make sure that you are mentally and physically fit to fly an aircraft to avoid like any accident, and you are ready to handle any situation above in the sky. So that's why government asks for your medicals, and that's where DGCA Class 2 medicals come in. It is a full body checkup done by the DGCA approved doctors. I will share the steps to find your nearest DGCA approved doctors upcoming minutes. So please don't skip this video, otherwise you will miss some important steps. So open Chrome browser in your mobile phone, and search for DGCA. Now click on the first option, and you will direct to this website, and then click on these three dots, so dot line, and then click on personals, click on medicals, then click on class 2 medical examiners, and here download, and here on the list. Now jumping towards section 2, that is what all test requires and what is the total cost of DGCA class 2 medicals. For what all test required, I will share my prescription given by my doctors. You can see somewhere here or here. I will share a screenshot of that. Let's talk about total cost. So the whole medical, including all tests and the fees of DGCA doctor, cost me around 10k. So many of you might be thinking भैया ये कुछ ज़्यादा ही दाम है. हाँ कुछ ज़्यादा है, बट मैंने डॉक्टर्स को बोला था कि मुझे क्लास 1 मेडिकल जैसे एग्जामिनेशन करिएगा, ताकि क्लास 1 में मुझे कोई दिक्कत ना हो. सो मैंने कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा कराए थे.
तो उसकी वजह से दाम यहाँ तक पहुँच गया। अगर आप वो नहीं कराओगे तो मे बी अराउंड 5 to 8K में निपट जाएगा आप लोग का। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 3, which is the last segment of this video, that is how hard is DGCA class 2 medicals. Frankly speaking कि it's not hard, सब कुछ आराम से ही हो जाता है। अगर आप फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हाँ, अगर ओवरवेट हो तो 2-3 टेस्ट एक्स्ट्रा कराने पड़ सकते हैं, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर ओवरऑल बोलूँ तो टेस्ट ईजी होता है। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, करा सकते हो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपका मेडिकल ख़त्म हो जाएगा तब आपको एक CA 35 करके मिलेगा, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना और रख लेना। जब आप फ्लाइंग करने जाओगे तो उसकी आई थिंक सो नीड पड़ेगी। और बहुत ज़रूरी बात है, जो DGCA क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट होगा वो आपका कम से कम 5-6 महीने बाद आएगा, या 5-6 महीने के अंदर भी आ सकता है। जैसे मेरा मेडिकल 5 महीने के बाद आया था। सो यस, ज़्यादा टाइम लेते हैं ये लोग, बट ठीक है। सो फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने से पहले क्लास 2 मेडिकल्स करा लो, ताकि उसके बेसिस पे तुम्हें फ्लाइंग स्कूल एडमिशन मिल जाए, और उसके बाद क्लास 1 कराना। बट मेरी मानोगे तो यार, फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने से पहले क्लास 2 क्लास 1 दोनों ही करा दो, ताकि तुम सेफर साइड पे रहोगे। आज के लिए बस इतना। कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये मेरा पहला वीडियो था और जो मेरा पहला ट्राई था, सो मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी, तो उस गलतियों को इग्नोर करिएगा, और जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं अपने आगे आने वाली जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई नए टॉपिक वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट्स पढ़ के बनाऊंगा वीडियोस पे।